Java inner class. Java inner class, or we can call as Java nested class. So Java inner class or nested class is a class that is defined inside another class. So in a class you have to define another class. It is called as the Java nested class or inner class. Advantages of Java inner class is what? There are basically three Good advantages. evening, sir. Good evening. Sir, So there are basically three advantages of the inner class in Java. One is nested class, represent a special type of relationship that it can access all the member of outer class. तो नॉर्मली आमे जानिछे जे जेतेबेले कोनोसी मेंबर को आमे प्राइवेट डिफाइन करिवा तो से केवल सेही क्लास रे ही केवल एक्सेस करि हो आमे अन्य क्लास रे ताको एक्सेस करि परिवा नाही किंतु जावा नेस्टेड क्लास बा इनर क्लास कोन करिवो आमे गोटे क्लास रो फंक्शनलिटी को आमे आउ गोटे क्लास रे कॉल करि परिबा सेटा प्राइवेट मेंबर हेले भी आमे कॉल करि परिबा सेटा कोनोसी मैंडेट न थाए कि आमे केवल पब्लिक जिंस आमे कॉल करि परिबा प्राइवेट मेंबर भी आमे कॉल करि हबो नेस्टेड क्लास किबा इनर क्लास रे so there are basically three advantages of inner class in Java. One is nested class represent a special type of relationship that it can access all the member of outer class. मु outer class रा सबो members माने को call करि परिबे. Nested class are used to develop more readable and maintainable code. तो जो code टा मु लिखिबी that is more readable and maintainable. Code optimization it required less code to write. आमे जते बेले इनहेरिटेंस पास करूचे हमर क्लासटा दीटा क्लास रहउची गोटे पेरेंट क्लास रहउची गोटे पुनी चाइल्ड क्लास रहउची दीटा स्ट्रक्चर रहउची एठी कोन हबो गोटे क्लास भितरे सब जगह क्लास हमर रहि गला तो हमको एठी कोन हबो ना गोटे बेनिफिटेड हबो जे कि गोटे स्ट्रक्चर भितर इन वन पेज you are getting all the contents. The nested class represent a special type of relationship that is it can access all the member of outer class including the private. Nested class are used to develop more readable and maintainable code. Code optimization it required the less code to write. हमको extends keyword use करके आउ गोटे structure define करने पड़ो नहीं तो ये गोटे आम क्लास डिफाइन कले class test outer one, that is a class we define class test outer one, then we are defining a private variable private int data equals to 30 तो गोटे प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन कराला तो क्लास इनर क्लास रहा ये void message function तो ये देख ये गोटे आउटर क्लास रहा आउटर क्लास भितर ही आ गोटे क्लास रहा क्लास इनर गोटे क्लास भितर आम आ गोटे क्लास डिफाइन कले एठी रहिला आ गोटे वेरिएबल डिफाइन कले int data equals to 30 प्राइवेट मेंबर ये जो डेटा 30 एटा आम एक्सेस कले कौटी ना इनर क्लास रे एक्सेस कले आम आगु जाने गोटे क्लास रे कौन मेंबर को जब आम प्राइवेट डिफाइन करवा सेटा आउ गोटे क्लास रे यूज करी हबनी किंतु एठी आम यूज करि पारले बा जो प्राइवेट मेंबर टाको आम आनिके इनर क्लास रे शो करि पारले
तापर एठी रहला टेस्ट आउटर वन तो हमर जो इनर क्लास फंक्शन टाको आमे केमती कॉल करिवा प्रथमे आमे आउटर क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेवा जेमती कि नॉर्मली आमे क्लास रो ऑब्जेक्ट बनौचे तो से बेला आमे क्लास रो ऑब्जेक्ट एठी बनेवा मिनट जेमती आमे नॉर्मली क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाउची सेमती एठी क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाला टेस्ट मेंबर आउटर वन ऑब्जेक्ट न्यू टेस्ट मेंबर तापर इनर क्लास केमती कॉल हबो ना आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम आउटर क्लास नेम डॉट इनर क्लास नेम then object then outer class object dot new inner. It is the way of calling or creating the inner class object. First you have to create a outer class object, then you have to mention outer class name dot inner class name, then one object, then outer class object dot new inner, then throw that in object we are calling the message function. This message function is present in the inner class. Any doubt in this program? सर सर से जो इनर पर इन आउट लिखछन इन बोले इन होची ऑब्जेक्ट माने इनर क्लास का ऑब्जेक्ट एटी क्रिएट हला अच्छा 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 से नाटा किछि भी नहीं होता हां एनी ऑब्जेक्ट एटा गोटे जिमति ना एटा भी गोटे सेमति ना हम नहीं पारे जिमति जे कोन से नेम नहीं पारे माने डॉट डॉट पर हम जो इनर लिखुचे सेटा होची इनर टा हमरो इनर क्लास रो नाटा लिखले तापर किछि गोटे ऑब्जेक्ट रो नाटा लिखले हां हां आगे सर बुझी और तळे जो इन डॉट मैसेज जमती नॉर्मल ऑब्जेक्ट डॉट से जो फंक्शन ये रहलो फंक्शन को कॉल जो जमते हलो फंक्शन कॉल वे एटी फंक्शन कॉल आगे सर then java local inner class is a class which is defined inside a method. Means you have to create a class, that class is defined inside a method, so that is called the local inner class. Okay, so how it is defined? I'll give you. So we are define here class, public class, so local inner. Just a minute. Okay, so here we define a class, so local inner, private int data equals to 30. That is a variable define कराला. Private int data equals to 30. Then मैं एक function define कली, void display function. अच्छा ये function भितरे मु कौन कली ना define कली class local. गोटे function भितरे आ गोटे class define है. Class local void message function. तो ये मते से कौन करिवो ना प्रिंट करिवो डेटा माने ये जो वैल्यू अछि 30 मते एटी 30 एटी प्रिंट कला तो ये मु कौन कली ना लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनेली लोकल आई इक्वल टू न्यू लोकल आई डॉट मेसेज फंक्शन तो ये हमें कहार ऑब्जेक्ट बनेले इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेले इनर क्लास ऑब्जेक्ट थ्रो रे मु मेसेज फंक्शन टाको कॉल कले ए फंक्शन टाको मु कॉल कले तापरे मते लोकल इनर क्लास को कॉल करिया पे किसी झंझट नहीं मु नॉर्मली कौन करी जो आउटर क्लास अच्छी आउटर क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेबी से ऑब्जेक्ट थ्रू रे मुझे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दउची डिस्प्ले फंक्शन रे ही हमर लोकल इनर क्लास अच्छी तो से फंक्शन टा कॉल हो गला बुझला
रोमेजित बुझ गला आज्ञा आज्ञा सर गोटे पर गोटे खाली करले माने इनर पर आउटर करले आज्ञा आउ का किसी डाउट अछि anybody is having any doubt संगीता ना सर ज्ञानंजय सर हाँ सर लास्ट पेज पर दिए सर हाँ एटा हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले लोकल इनर वन टा होची हमर क्लास रो ऑब्जेक्ट बनाए कि ता भीतर जो डिस्प्ले फंक्शन टा अछि हमें डिस्प्ले फंक्शन टा को कॉल करले बुझि पाइलो हाँ सर ये प्रोग्राम का आइतो देखे कि बुझे दिए सर मोटा रन कर दउची the D drive Java C so I am compiling and executing the file तो मते आ भीतर फंक्शन अछि एटी शो करिवो हाँ सर okay so 30 the private member here I define 30 so when I creating a object local I equals to new local I dot message function call कले तो मते एटी 30 वैल्यू टी शो कला बुझियला अच्छा आज्ञा सर सर ये जो प्रोग्रामिंग का আছে जो रिटर्न प्रोग्राम का আছে बुझे दिए सर हाँ एटा प्रथमे मु गोटे क्लास बनेली लोकल इनर क्लास भीतर मु गोटे वेरिएबल डिफाइन कली दैट इज प्राइवेट int data it is a private member then private member टाको मु कॉल करिवि कहा भीतर ना local inner class means the class that is defined inside a method is called as the local inner class एठी गोटे क्लास लोकल रहिला void message function system.out.println data तो जो डेटा अछि एटी से ए फंक्शन भीतर कॉल कराला माने डिस्प्ले फंक्शन भीतर गोटे क्लास डिफाइन कराला ता ना हला क्लास लोकल ता भीतर मेसेज फंक्शन आसला तापरे लोकल इनर वन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू लोकल इनर वन मई क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेली से ऑब्जेक्ट रे जेतले डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करिवि ऑटोमेटिक को हबो ना ए जो ए क्लास टा भी कॉल हे जिवो कारण ए जो क्लास लोकल इनर क्लास भीतर जो मेसेज फंक्शन अछि सेरा एठी ऑब्जेक्ट बनाई की कॉल कराई लोकल आई इक्वल्स टू न्यू लोकल आई डॉट मेसेज ओके अच्छा थैंक यू Java anonymous inner class. Anonymous inner class is a class that the class have no name. The class is not having any name. It is called as the Java anonymous inner class. It should be used if you have to override a method of class or interface. So when the anonymous class is used, when you override a method of a interface or you can call as the abstract classes. So this anonymous inner class is implemented in the two way by using of abstract class or by using of interface. So in the two way we can use the Java anonymous inner class. The first is here we define
we define हाँ सर abstract रे करले कोन होतला कहथिले abstract class भितर आमे गोटे मेथड डिफाइन करथले that is a abstract method. Okay, for abstract method is a incomplete method where the method is only declare and it is used in the derived class or child class. Okay, so if one or more class want to implement the same function and they want to give their own functionality, in that case we are using abstract class. Okay, माने एक रो more than one classes same function को use करिवे यूज करके जदि तांकर निजर फंक्शनालिटी देबे तो आमे यूज करिवा कोन ना abstract class यूज करिवा. Why abstract class is used? ना for defining the abstract method. Abstract method को define करिवा हेले हमको abstract class रो दरकार पड़ियो. तामाने नुहे जे abstract class भीतर आमे complete method define करि परिबा नै. आमे complete method भी define करि परिबा आउ आमे abstract method को define करि परिबा. But for defining the abstract method माने abstract method टा को define करिबा को हेले मते एटा यूज करिया पड़िबो abstract class टा यूज करिया पड़िबो. बुझला आज्ञा सर एठी मु यूज कली abstract class person abstract void it एटा गोटे फंक्शन रहिला आपरे क्लास टेस्ट anonymous एटा गोटे क्लास डिफाइन करला टेस्ट anonymous inner class. Then we are creating a method हम गोटे मेथड एठी डिफाइन कले. अच्छा ये मेन मेथड भीतर मु कोन डिफाइन कली ना पर्सन p इक्वल्स टू न्यू पर्सन माने ए पर्सन क्लास रा ऑब्जेक्ट बनाला. देखो as we know that we are not able to create a object of a abstract class. We cannot create a object of abstract class, but here we are creating a object. अच्छा हमें एठी ऑब्जेक्ट बने जे किंतु सेमीकोलन देने. If we are using semicolon that means what the statement is complete, but here our statement is not complete. मो statement टा again continue करछि. कोन continue करछि ना person p new person ए person न ब्लॉक भितरे मु कोन यूज कली ना गोटे फंक्शन डिफाइन कली void it function. it function ए रहला स्टेटमेंट इनकम्प्लीट वर्जन जानि जेंति कोन है जी स्टेटमेंट एटी इनकम्प्लीट बोल के जानिबा स्टेटमेंट इनकम्प्लीट जेहेतु आम ये सेमिकोलन यूज करें से इटा हूँ इनकम्प्लीट. ओके तापर ये जो abstract मेथड टा डिफाइन करिजे हमें void it मेथड टा डिफाइन करिजे. तो void it फंक्शन टा हमें एठी इम्प्लीमेंट कले कोठी इम्प्लीमेंट कले ना ए क्लास रे हमें इम्प्लीमेंट कले. बुझी होचे सर ये जो void it टा से abstract void it संग समान ना अलगा अछि. हाँ माने abstract void it टा जो हमें डिफाइन करछे abstract class is incomplete class हमें ताको इम्प्लीमेंट करिवा कोठी. तो as you know that for implementing the abstract class you require a derived class किंतु हमें कोनो से derived class यूज करलेनी बट हमें ताको इम्प्लीमेंट एठी कर देले void it एठी चाइल्ड क्लास नहीं तेनो एटा कोन रहला चाइल्ड क्लास इज anonymous क्लास तेनो एठी void it ताको हमें एठी इम्प्लीमेंट करले आ ये जो p ऑब्जेक्ट जोरा बनै छे पर्सन क्लास रा से ऑब्जेक्ट रे हमें it फंक्शन को कॉल करले. बुझला सर सर ये जो it फंक्शन को कॉल हम करछो सेटा भीतर रो it फंक्शन टा ना हमर abstract रो भीतर कोडा ए तो गोटिए तो हमें मेथड डिफाइन करी छे ना abstract void it आर कोन किछि फंक्शनलिटी अछि कि एटा केवल डिक्लेयर है जे इम्प्लीमेंट कोडी होई जे एठी इम्प्लीमेंट है तो जेताले हमें p.it करिवा से कहा को कॉल करिवो आको कॉल करिवो void it को कॉल करो तो नाइस फ्रूट देखियो आ एठी तो किछि नाही ना ए जगह किछि फंक्शनलिटी अछि कि ए जो ना सेटा खाली डिक्लेयर है तो हां कॉल करिवो आको ही कॉल करिवो. बुझियला आगे सर ते void जगह रे जो p टा लइला कॉल करिवे कोनटा कहिलो सर जो void it टा अछि ताको जो कॉल करिया पे से p टा रखा गला p.e dot यूज करा जे dot means access बुझियो आगे
तो आपन वॉइस कमी जाउची सर मोर वॉइस क्लियर अछि तमर नेट टिका अप एंड डाउन हेतिबो ना ना आपन वॉइस टिके स्लो सुबुची सर क्लियर सुबुची लो सुबुची हां क्लियर सुबुची किंतु टिके लो सुबुची अच्छा मझरे कोन टिके प्रॉब्लम बढ़ा सर आउटे जोरे कहबी हां सर अब टिके जोर अच्छा हो ठीक है So now I run this program test anonymous inner class. এটা দেখাইলা আমার p.eat function আমি কল কলে এটা দেখাইলা nice fruits ওকে এই Yes, sir. এই ফাংশনটা দেখাইলা নেক্সট এক্সাম্পল দিবা Java static nested class. So what is static nested class? A static class that is created inside a class is called as the static nested class. A static class that is created inside a class. What a static class? ଆଉ ଗୋଟେ class ଭିତରେ ଯଦି call ହଉଛି ଏଟାକୁ କୁହାଯିବ static nested class. It cannot be accessed the non-static data member and method. It can be accessed by the other class name. মানে ଆଉ ଗୋଟେ class name through ରେ call হবে ମାନେ it can be accessed by the outer class name through ରେ call হবে. It can access the static data member of outer class including private. When you are using a static class, the static class can access the static member including the private. Static nested class cannot access the non-static data member. The static nested class non-static data member को call करी परिवने. So Java static nested class, how it is implemented? So first, if you notice class test outer one two, we're defining a class. Class name is test outer one two. Then we are defining a variable static int data equals to 30. So we are defining a static variable. Then static class inner. We are defining sir, sir. सर से static काहे की यूज होतला आउटपुट करले static कौन ପାଇଁ यूज करा जायो to make anything as a constant. So you can define a variable as static. हाँ सर मन पड़ला जेतरा हमें वेरिएबल टा को स्टैटिक यूज करबा जते बेले हमें जते थरा ऑब्जेक्ट टा बनेबा वेरिएबल वैल्यू टा रीइनिशियलाइजेशन हबने आउ आगे सर when you define a method as static that means it is a fixed okay कांस्टेंट हाँ ମୁଁ ଧର ତମକୁ କହିବି ଯେ ତୁମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଅ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଖୋଜିବ ଯୋଉ ଲୋକ ର ଆଇଡି नंबर ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଖୋଜିବ ବାଇକ୍ ର नंबर 4506 ଥିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଟା ଯାଇ ଖୋଜିବ ସେଟା 4506 ମାନେ OROD ଥିବ ତମେ पर्टिकुलर ସେଇ ବାଇକ୍ ଟା ହିଁ ଯାଇ ଖୋଜିବ ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ରେ ଯେମିତି କି OD ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ PN ଥିବ ତ ତମେ ସେଟା ଖୋଜିବନି ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିବ ଯୋଉଟା OD ଥିବ so that means that bike is registered in the Odisha state and you have to find out that particular vehicle okay आगे सर the static nested class is just like that class test outer to static int data equals to 30 so we are defining class inner static void message function so we are defining static int data is 30 static class inner the class is in class which defined as a static void message function
तो स्टैटिक क्लास भितर मु स्टैटिक फंक्शन टा डिफाइन कली जा ना हला मेसेज फंक्शन तापर मेन मेथड भितर मु कोन करिवि ना स्टैटिक इनर क्लास टा को कॉल करिवि इनर क्लास को कॉल करबा को हेले मते आ प्रथमे आउटर क्लास रा ऑब्जेक्ट बना है कि तापर इनर क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेवा दरकार नै मु डायरेक्टली कोन करिवि ना आउटर क्लास रा नेम पास करिवि तापर मु इनर क्लास रा नेम पास करिवि तापर डॉट मेसेज फंक्शन यूज करिवि आउटर क्लास डॉट इनर क्लास डॉट मेसेज फंक्शन तो प्रथमे आउटर क्लास ऑब्जेक्ट रहिबो तापर इनर डॉट इनर क्लास तापर मेसेज फंक्शन हमें कॉल कले ऑटोमेटिक कौन हबो ना एटा कॉल हबो बुझी होची आप हमको बार बार ऑब्जेक्ट बनेवा दरकार नहीं से केवल आउटर क्लास नेम थ्रू रे कॉल हबो अच्छा now I am showing the example तेरा शो कला द डेटा इज 30 तो ये जो स्टैटिक क्लास हमें डेटा 30 डिफाइन करछे ये 30 को सी कॉल कला हमें प्रथमे बनेले आउटर क्लास डॉट इनर क्लास डॉट मेसेज फंक्शन क्लियर आगे सर Okay. so it is all about your java static and inner classes next we move to the exception handling the explore the errors and exception errors and exception it is used to handle to create a reliable application okay so error and exception when you are uh, writing a program then there may be a chance of the errors like sometimes you are not write the keywords properly like when you are writing the statement at that timing
when you end the statement you are not writing the semicolon. Statement टा लिखि सारा परे आमे semicolon यूज करिवानी तो सेटा गोटे एरर्स आसुची हमर जो सब जावा रा कीवर्ड्स अछि जेंति कि पब्लिक अछि सिस्टम टा में लिखु जे कैपिटल एस से जगह में स्मॉल एस लिखिवा so that is also a syntax error that is handled to create a reliable application. It results of application bugs. It beyond the control of application माने application टा एटा निजे निजे handle करि परिबो नाही. An exception that occur at runtime is called as the runtime error. तो जेमते कि आमे रास्ता रे जाउचे तो आमे एक्सपेक्ट करूने कि हम गाड़ीटा पंक्चर हे जो हटात हम गाड़ीटा पंक्चर हे गला आमे बेटर गला होय. So that is called as the exception means the thing that you are not expecting that is happen with you in the same sara jodi tamo sete ghotuchi then that is called as an exception. Then it may be मोर आजी पाग सुखला अछि हठात वर्षा हला बे तो तमे उदा हे जीवो तो तमे जाननो आजी वर्षा हबो तो रेनकोट तम पाखर नाही तो वर्षा जला हला तमे उदा हे गेलो. So that is called as the what you can say it is a type of exception. So an exception and error that occurs at runtime it shows the abnormal behavior which leads to the unpredictable result so which is not giving you the proper result that is called as exception. It disrupts the normal flow of your application. हमारा application normal flow को से disturb करियो इटा हला हमारा exception. Error is handled to create a reliable application. A result of application bugs it beyond the control of application माने application निजे निजे याको control करि परिबो नाही. This error is of three types. So आम error टा होची three type. One is one is your types of error. One is syntax error. Second is logical error. Third is runtime error. So there are three types of error we're using. One is syntax error, logical error, another is your runtime error. So three type of error we have. The syntax error is what? When keywords are misspelled, कीवर्ड टा में ठीक से लिखिबानी punctuation is omitted. When keywords are misspelled, punctuation is omitted and is called syntax error. माने मो कीवर्ड टा भूल थिबो माने कैपिटल सिस्टम जोटी कैपिटल थिबो हमरो सिस्टम होची कैपिटल
system dot out dot print ln तो एटा मोर डाटा एठी मते डिस्प्ले कला तो मु एमती न लिखिकी मु कौन करी धर कैपिटल एस जगह स्मॉल एस लिखी एठी ओ जगह कैपिटल ओ लिखी so that is called as your what syntax error. So here it is having syntax error, means keywords are misspelled. And next is punctuation is omitted. Punctuation is omitted means, so when I write the statement, if I not passing anything, I am not mentioning here semicolon. So here, what is it? Punctuation, it is called as the syntax error. आ भीतर सब syntax error जीवो. एटा को जो punctuation. Punctuation is omitted. Keywords are misspelled and punctuation is omitted. Means semicolon has not given here. सेमीकोलन टा दिया जातो ना हाँ, semicolon has not given. That is called as my syntax error. सर पंक्चुएशन एरर और सिंटैक्स एरर बिटवीन डिफरेंस का Syntax error भितर punctuation error टा आसियो. Punctuation is not error. Punctuation is omitted. Punctuation माने हमर semicolon, colon एवढा को जो punctuation. बुझेला? हाँ सर Okay. थैंक यू So in the next class, I will go for the logical error and runtime error. Okay. चलो. लॉजिकल एरर और Runtime error. अच्छा ओके Okay. चलो. Bye. ओके गुड इवनिंग सर नमस्कार ठीक है सर. Hmm.